Hello, I'm Dr. Malay Mehta, cosmetic dermatologist and a hair transplant surgeon from Mumbai. Today we are going to share this interesting story, post 5-year hair transplant journey. Many of the time we are asked about this question, how long the hair transplant would last. Generally speaking, it should last beyond 15 plus 20 plus years because the donor area, which is hormone resistant, they are genetically more stronger hair. So when they are implanted at the front area, it should be lasting forever or maybe even 10-15 साल. ये केस हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज 5 years तक ही इज़ एवरी ईयरली कमिंग टू अस एंड ऑन एंड ऑफ हिज जर्नी हैज़ बिन वेरी गुड. फॉर्चुनेटली ही इज़ नॉट यूजिंग मिनॉक्सिडिल फिनास्टेराइड. साल में 1-2 बार यूज़ कर दे छोड़ देते हैं. व्हेन देयर वॉल्यूम कम्स डाउन ही कम्स टू अस. सो वेरी हैप्पी टू शेयर हिज स्टोरी. इफ़ यू कैन सी हिज बिफोर कंडीशन, this is when he came to us in 2020. This is the baseline condition. Frontotemporal recession is seen. You can see the frontotemporal recession on the other side also. Mid scalp volume is also quite affected. And if you can see this gentleman, that's where we ended up doing 2500 to 2700 graft, and even the crown area we ended up doing 2100 graft. All in all, हमने I think 4600 जितने grafts किए थे. And if you can see his 1 year transformation in the same iPad, I do have the 1 year transformation. Volume looks very good. The overall hairline also looks very nice and natural. The zigzag pattern is also achieved. And if I can remove the iPad, this is the result after 5 years. Phenomenal volume is maintained. If you can come close and just see the hairline, this is also very eye pleasing to us, and overall volume has stayed good hairline. Even the mid scalp and a crown area coverage is quite significant. In this area we can see maybe around 10-15% of the volume deficit is there. I wanted to show you the donor area healing. At times doctor failed to ask, and even the patients try to not ask the significant question, which is the donor area healing. So if my donor area healing looks this good, for God forbid he requires some graft, शायद उसकी पेशेंट की ज़रूरत है कि मे बी अराउंड 1000 ग्राफ्ट 2000 ग्राफ्ट फ्यूचर में कोई रिक्वायरमेंट हो, तो भी हम फ्यूचर में 5 years 10 years के बाद 15 years के बाद ये पेशेंट को 1000-1200 ग्राफ्ट का रिफिल ग्राफ्ट कर सकते हैं. एंड वी कैन सर्टेनली मेक हिम हैप्पी बिकॉज हमारे पास डोनर इतना अवेलेबल है और लॉन्ग लास्टिंग पेशेंट्स का रिजल्ट रहता है. सो ट्रांसप्लांट कई बार ऐसा लगता है कि 1-2 साल ही रहता है, ऐसा मिसनोमर रहता है, या तो फिर उनको लग रहा है कि हाँ भाई थोड़े टाइम तक रहेगा और फिर पूरे बाल चले जाएगा. आइडियली कोई अच्छा ट्रांसप्लांट सर्जन है, नॉट ओनली ही विल डू अ गुड ट्रांसप्लांट बट ही विल ट्राई टू मेंटेन द गुड लुकिंग रिजल्ट, either minoxidil or PRP or derma roller. These days the fancy molecules are also available, Capexil, Redensil. Even the treatment like exosomes have also come in the market. So stay in touch with us. Dr. Malay Mehta, cosmetic dermatologist and hair transplant surgeon from Mumbai. Bye bye.